We have now started decoding previous year question. अगर आपके 10 above आए हैं then awesome. तो अगर आप अपना CUET UG एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं then you cannot miss this session. इस यूनिट से we can observe a lot of PYQs. ये तो एकदम बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लग रही है. Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Welcome back to PG Psychology. I hope you all are doing well. So after discussing so many strategies, so many tricks to clear your CUET UG exam, we have now started decoding previous year questions unit wise. So unit 1, 2 and 3 are live now. अगर आपने नहीं देखा then check them out. आज हम unit 4 discuss करने वाले हैं. उसके अलावा in my previous video I had discussed some effective ways to attempt MCQs. अगर आपने वो भी नहीं देखे then check it out as well, so that you know कि हमें किस approach से MCQs को attempt करना है, right? So before we begin with our session, myself Alankrita Kaushal, and I would like to introduce you all to Power Within Psychology. So Power Within Psychology is India's leading mentorship and guidance platform for all psychology aspirants for the past 7 years now. Since ये series CUET UG को target कर रही है, I would like to introduce you all to our AARAMBH Batch. Our AARAMBH Batch is specifically for all those who are targeting CUET UG and wish to pursue psychology in their bachelors. आरएम बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, उसके साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, डिजिटल स्टडी मटेरियल इन टर्म्स ऑफ पीपीटीज, मॉक टेस्ट सीरीज, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस. अगर आपको कुछ भी डाउट हो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, रेयर कलेक्शन ऑफ PYQs एंड कंप्लीट राउंड 2 आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन. सो ये हमारे लिस्ट ऑफ टॉपर्स है फ्रॉम द पास्ट 4 years. अगर आप इनकी स्टोरीज या इनकी जर्नी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं then do check out Toppers Talk series on our YouTube channel as well. जैसा कि मैंने कहा आज हम यूनिट 4 को डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आप अपना CUET UG एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं then you cannot miss this session, क्योंकि ये यूनिट पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट से we can observe a lot of PYQs, right? So before we begin with questions, there are some basic instructions. Pause if needed. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, you can pause the video, attempt the question and then unpause it. All right? Then we have read the question carefully. जो भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, read it very carefully. एक एक वर्ड पे फोकस करो. Follow along actively and try to answer all the questions. जो भी क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा देन डोंट वरी, मैं सारे ही क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी दूंगी. कीप योर स्कोर एंड बी ऑनेस्ट अबाउट इट. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन राइट, गिव योरसेल्फ +1 एंड प्लीज बी ऑनेस्ट अबाउट इट. ओके, सो आफ्टर यू आर डन, focus on the areas where you lost marks or found the questions difficult. तो after we are done with the session, आप उन एरियाज पे फोकस करो जहां पे आपके मार्क्स कटे हैं या फिर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हो. ऑलराइट, एंड फाइनली इफ समथिंग इज अनक्लियर, ड्रॉप अ कमेंट बिलो, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. तो आज हम 14 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. बुलिमिया नर्वोसा इज अ डैश. वेरी सिंपल क्वेश्चन. बताओ बुलिमिया नर्वोसा क्या है? इज इट अ डिप्रेसिव डिसऑर्डर? इज इट एन ईटिंग डिसऑर्डर? Is it a conduct disorder or is it an anxiety disorder? So, bulimia nervosa is an eating disorder. Eating disorder में क्या क्या आ जाता है? Bulimia nervosa of course. Then we have anorexia nervosa and binge eating disorder. All right. So, bulimia nervosa में क्या होता है? Individuals पहले they engage in binge eating and then they feel guilty about it. फिर वो engage करते हैं in purging behaviors. Purging behaviors in the sense they take laxative or they induce vomit so that जो भी उन्होंने खाया वो बाहर निकल जाए, right? Then we have anorexia nervosa. इसमें लोग अपना फूड इंटेक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, खाते ही नहीं है. इन लोगों का BMI बॉडी मास इंडेक्स बहुत लो होता है. Then we have binge eating disorder. इसमें people engage in episodes of binge eating जिसमें वो अनकंट्रोलेबली खाते चले जाते हैं, राइट?
So this was about eating disorders, and bulimia nervosa is a part of eating disorder, right? अब ये है match the following. Let's look at the options. Positive symptoms of schizophrenia, negative symptoms of schizophrenia, inappropriate affect, psychomotor symptoms of schizophrenia. So पॉजिटिव अगर कहीं भी दिख जाए ना, सो दैट मीन्स कुछ ऐड हो रहा है, एंड नेगेटिव कुछ कम हो रहा है, डिप्रिशिएट हो रहा है. सो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. यहाँ पे लिखा है बिजार एडिशन. एडिशंस मतलब ऐड होना. सो दिस इज ऑलराइट. देन नेगेटिव सिम्टम्स का पैथोलॉजिकल डेफिसिट्स. डेफिसिट का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, घटना, राइट. Then we have inappropriate affect. Affect is emotion. So, emotion that are unsuited to the situation. For example, एक बच्चा फाउंटेन में गिर गया और आप हंस रहे हो. So that is an inappropriate emotion, right? Psychomotor symptoms of schizophrenia. Psychomotor has something to do with body movements. So people who suffer from schizophrenia have very odd body movements or very odd gestures. So this is odd grimaces or gestures. Now, क्या है हमारा आंसर? Our answer is option number 3. So, match the following को attempt करने का एक और तरीका है. आप एक सेट ढूंढ लो जो आपको फॉर श्योर पता है कि सही है. फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिव सिम्टम्स का आंसर बिजार एडिशन ही है. अब ऑप्शंस में देखो, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में, सो दिस इज योर आंसर. ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इन ब्रीफ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. इसमें आ जाते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स एंड साइकोमोटर सिम्टम्स एज वी डिस्कस्ड. पॉजिटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं डेल्यूजन्स. डेल्यूजन्स आर फॉल्स बिलीफ. फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपके ऊपर कोई स्पाई कर रहा है, इवन दो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बट फिर भी आप ये बिलीव करते हो. सो दैट इज अ डेल्यूजन. हैल्यूसिनेशन इज कि आपको कुछ सुनाई दे रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा है, या फिर आपको कुछ अपनी बॉडी पे चलता हुआ महसूस हो रहा है, इवन दो ये स्टिमुलस सच्ची में नहीं है, बट यू फील लाइक इट इज रियल. ऑलराइट. Then disorganized thinking, formal thought disorders. So, people who suffer from schizophrenia have a very peculiar thinking pattern, right? तो उनके थॉट्स बहुत ही ज्यादा स्कैटर्ड रहते हैं, जिसकी वजह से उनका कम्युनिकेशन इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल, कि एक टॉपिक के बारे में बात करें, अचानक से किसी और टॉपिक पे कूद जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बात करें एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज की बात करते करते अचानक से एलियन इन्वेजन की बात करना स्टार्ट कर देंगे, नए नए अपने शब्द बनाते रहेंगे, एक ही चीज को बार बार रिपीट करते रहेंगे, राइट. देन वी हैव नेगेटिव सिम्टम्स. नेगेटिव सिम्टम्स में आ जाते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, व्हिच मींस इनकी स्पीच बहुत लिमिटेड होती है. देन वी हैव ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट अफेक्ट. अफेक्ट, एज आई सेड बिफोर, इज इमोशन, राइट. सो ब्लंटेड अफेक्ट इज reduced emotional experience, and flat affect is no emotional experience. Then we have social withdrawal. Social withdrawal as in कि ये least interested होते हैं to form social relationships with anyone, be it their friends, be it their family. Then we have psychomotor symptoms. This has something to do with body movements. So people who suffer from schizophrenia have very odd body movements and odd gestures. तो ये अगर extreme form ले लेता है, then it is known as कैटेटोनिया. कैटेटोनिया के भी टाइप्स होते हैं. कैटाटोनिक स्टपर, इसमें मोशनलेस बैठे रहते हैं, अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, आसपास से कुछ मतलब नहीं. कैटेटोनिक रिजिडिटी, इसमें अपनी मसल्स को स्टिफ करके एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं घंटों. देन वी हैव कैटेटोनिक पोस्चरिंग. इसमें पीपल मेक ऑड पोस्चर्स और बिजार पोजीशंस फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, कोई अपने सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, घंटों घंटों बैठा हुआ है. सो दैट इज अ बिट ऑड, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया. आई होप दिस वाज क्लियर. नाउ
Manjeet is inattentive, hyperactive, and mostly impulsive. He is most likely to be diagnosed with. अब अगर मैं इसमें की पॉइंट्स हाईलाइट कर दूं तो आप इजीली गेस कर पाओगे ये कौन सा डिसऑर्डर है. बताओ. इज इट स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर? नो, बिकॉज इसमें तो एक स्पेसिफिक लर्निंग एरिया में डेफिसिट होते हैं. फॉर एग्जांपल रीडिंग में, राइटिंग में, मैथमेटिक्स में. इज इट इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी? अगेन नो, बिकॉज यहाँ पे तो लो IQ होता है. इज इट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर? अगेन नो, बिकॉज यहाँ पे तो you can see communication deficits, plus repetitive behavior. All right, so our answer is option number D, attention deficit hyperactivity disorder, ADHD. Now ADHD क्या होता है? ADHD is characterized by inattention, hyperactivity and impulsivity. So ADHD का diagnosis is quite common in children, but ये adults में भी diagnose हो सकता है. But इसकी एक condition है कि ADHD के symptoms must persist before the age of 12. तो अगर किसी अडल्ट में डायग्नोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको सिम्टम्स 12 साल की उम्र से पहले से ही है. उस टाइम पे मे बी एविडेंट ना हो या उस टाइम पे डायग्नोज ना हो पाए, बट सिम्टम्स तब से ही होंगे. ऑलराइट, इनअटेंशन इज कि आप किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी अटेंशन नहीं बना पा रहे उस चीज के टुवर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहे. नो मैटर आप कितना ध्यान देना चाहते हैं, बट योर ब्रेन इज वायर्ड इन अ सर्टेन वे कि आप उस पर अटेंशन दे ही नहीं पा रहे. देन वी हैव हाइपर एक्टिविटी. हाइपर एक्टिविटी इज इधर उधर भागते रहना, रेस्टलेस फील करते रहना. इम्पल्सिविटी इज बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना. आपका दोस्त बैठा है साइड में, उसको पेन से पोक करते रहना, अपना बैग अचानक जमीन पे फेंक देना. सो ऑल ऑफ दीज आर इम्पल्सिव बिहेवियर्स, राइट? So this was about ADHD. Now, choose the correct option for identifying the features of a psychological disorder. अब बताओ, इसमें आ जाएगा 4 Ds of abnormality. बताओ क्या आंसर होगा? 4 Ds है deviance, danger, distress and dysfunction. Now it is very important for you to use recall in such questions. Recall क्यों? आप देख सकते हो कि सारे ही ऑप्शंस कितने सिमिलर लग रहे हैं. So first if you read the question and then try to come up with the answer first in your mind, उसके बाद ऑप्शंस में से ढूंढो, then it will be easier for you. Otherwise you may get confused, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एक वर्ड अलग है बस. जैसे डिपेंडेंट, aggression, delusional, dependent. All right, now let's discuss 4 Ds of abnormality. First is deviance. Deviance है how rare or unusual your behavior is. Now this is highly dependent on the social context as well. For example, in India we don't address our elders by their names, right? हम अंकल बोल देते हैं, आंटी बोल देते हैं, हम किसी को नाम से नहीं बोलते. But in Western cultures, it is quite common for people to address elders by their first names, right? अगर आप यहाँ पे किसी को नाम से बुलाओगे, so they will be like कि तुम कितने बदतमीज हो. But West में ऐसा नहीं है, right? So जो Indians के लिए चीज abnormal है, वो Western people के लिए काफी normal है, right? Then we have danger. Danger is कि आपकी mental health condition की वजह से you pose a threat to yourself or others. आप खुद भी सेल्फ हार्म बिहेवियर्स में एंगेज हो सकते हैं एंड यू आर ऑल्सो अ थ्रेट टू अदर्स एज वेल. देन वी हैव डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस इज कि आप अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस. आपको हमेशा एंग्शियस फील होता रहता है, यू आर ऑलवेज अपसेट. देन वी हैव डिसफंक्शन. डिसफंक्शन इज अगेन ड्यू टू अ मेंटल हेल्थ कंडीशन. आप अपनी लाइफ में प्रोडक्टिवली एंगेज नहीं हो पा रहे हो. जो आप डेली लाइफ में करते थे
वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, आप खाना नहीं बना पा रहे हो, कॉलेज नहीं अटेंड कर पा रहे हो. सो ऑल ऑफ दिस is hindering it with your daily life functioning, right? So this was about 4 Ds of abnormality. Next question. Choose out of the following statements what is true about somatic symptom disorders. Now this is a multiple select question. All right? इसमें आपको somatic symptom disorder के बारे में जो भी statements true है वो select करनी है. Now let's try to break it down. Soma का मतलब होता है body. So that means something related to the body, right? Let's read the statements. First is a person has persistent body related symptom. So this is true, right? Now somatic symptom disorder is जब किसी को लगता है that they have developed a serious illness because of the symptoms they are having. One important point to note here is that symptoms are real. जो भी सिम्टम्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं दे आर रियल, वो फेक नहीं कर रहे, सिम्टम्स रियल है बट मे बी नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे आर रेफरिंग, राइट? फॉर एग्जाम्पल किसी को पेट दर्द हो रहा है, वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मल्टीपल टेस्ट करवा रहे हैं बट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा, राइट? बट वो सिम्टम्स से इतना प्रीऑक्यूपाइड हो गए हैं विच इज कॉजिंग देम डिस्ट्रेस, राइट? नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कंटिन्यूअली वरिंग अबाउट द सिम्टम्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. Frequent visits to doctor, this is also true. Now experience paralysis, blindness, etc. This is false. Why? Because ये symptom है of conversion disorder. Conversion disorder में you experience neurological symptoms like paralysis, blindness, but इसका कोई medical reason नहीं होता. You experience them because of psychological pain. All right. Then preoccupation with the thought of developing various illnesses. This is also not true because this is a symptom of illness, anxiety disorder. Now इसमें you don't have any symptoms but you worry that you might have a serious illness or various illnesses. All right. So इसमें क्या है हमारा सही आंसर? A, B, C only. All right. Let's move on to the next question. An 18-year-old male had a severe dislike for touching doorknobs. He feared contamination and spent hours washing his hand if he had to open a door at his office. He spent more than 3-4 hours taking a shower and spent a lot of time cleaning surfaces after incidental contaminations. Eventually, he stopped waking up in the morning as it was not worth the effort. Identify the disorder he is suffering from. Batao. So, is it depressive disorder? No, because mood की यहाँ पे कोई बात ही नहीं की गई. Is it post-traumatic stress disorder? Again, no, because there is no as such trauma mentioned here. Is it somatic symptom disorder? Again, no, because यहाँ पे that person is not worried about developing an illness, right? It is obsessive compulsive and related disorders. Why? Because the 18-year-old male has obsessive thoughts about contamination germs, जिसकी वजह से he is engaging in compulsive behaviors like 3-4 hours shower, बार बार surfaces को clean करना, right? So obsessions are recurrent unwanted thoughts जो हम consciously नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में आए, but they keep on occurring. All right? और obsessions को erase करने के लिए we engage in compulsive behaviors like cleaning, counting. All right. Next question. Beth, aged 18, has been trying to keep a secret from her family and friends. She is a binge eater. When others are not around, she gorges on cakes, ice cream, and other food
so fast that she hardly has time to chew. Once she begins, there is no stopping until her stomach aches. After her binge, Beth feels disgusted with herself and makes herself vomit, then takes a double dose of laxative. Her life is totally dominated by her obsession with food. Beth is suffering from which disorder? बताओ. ये तो हमने डिस्कस कर लिया in the very first question. Yeah. This is bulimia nervosa. Why? Because पहले binge eating हो रहा है, right? उसके बाद purging behavior. Anorexia nervosa तो नहीं है because she is eating. Body dysmorphic disorder भी नहीं है because body dysmorphic disorder is something where you are preoccupied with your physical experience, physical appearance, right? Conduct disorder भी नहीं है क्योंकि ये तो children और adolescents में देखा जाता है when they engage in antisocial behaviors. All right. Now, CUT UG में पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं. दिस इज वन सच क्वेश्चन. तो ये पैसेज के बेसिस पे देयर आर 5 क्वेश्चंस. हम ये पैसेज पढ़ेंगे एंड देन वील अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस. सो मेजर चंद्रा, an infantry soldier, was posted in the border area with his unit. One day, an informer gave a message that terrorists have entered in a school and are threatening to blow it up if some of their terrorist prisoners are not released. The major entered the school premises along with other soldiers, but was shocked to see the terrorists armed with the latest weapons. Soon the firing started as the terrorists had an advantageous position, so they immediately shot down a few soldiers without caring for their life. Major Chandra entered the school and started firing, which led to killing of the terrorists, and he got badly injured. Though the major has recovered, still he gets flashbacks and recurring nightmares. Now, ये तो एकदम बॉलीवुड मूवी की स्टोरी लग रही है, but I'll underline the key points. Gets flashbacks, recurring nightmares. All right. Now let's see the questions. Identify the disorder Major Chandra is suffering from. Now, this is quite obvious. बताओ. Is it conversion disorder? No, because conversion disorder में तो neurological symptoms होते हैं. We discussed it. Is it illness anxiety disorder? Again, no, because here you are preoccupied with developing various illnesses, right? Is it generalized anxiety disorder? Again, no, because यहाँ पे तो persistent और uncontrollable worry होती है. ऐसा भी कुछ नहीं है. Our answer is post traumatic stress disorder. अब post traumatic stress disorder में क्या होता है? If you experience a traumatic situation, चाहे फर्स्ट हैंड या किसी और को आपने ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरते हुए देखा हो, सो देन आपके माइंड में वो चीज रह जाती है. ट्रॉमा आपके माइंड में स्टोर हो जाता है, आपकी बॉडी में कहीं स्टोर हो जाता है और वो बार बार निकल के आता है इन टर्म्स ऑफ फ्लैशबैक्स एंड नाइटमेयर्स. ये काफी कॉमन होता है इन सोल्जर्स, सर्वाइवर्स ऑफ वॉर या फिर सर्वाइवर ऑफ अब्यूज एज वेल, राइट? सो the major is also suffering from post-traumatic stress disorder. Now, which of the following is also a type of trauma and stress-related disorder? बताओ और कौन सा type है? Is it somatic symptom disorder? No, ये तो somatic symptom and related disorders का type है. Is it separation anxiety disorder? Again, no, ये anxiety disorders का part है. Is it social anxiety disorder? No, ये भी anxiety disorders का part है. So our answer is adjustment disorders. Pick out the other symptoms related to post-traumatic stress disorder. बताओ. Is it paralysis? No. ये तो conversion disorder में देखा था. Is it depressed mood? मतलब ये एक symptom हो सकता है, but this is not a core symptom of PTSD. Alright? So ये भी answer नहीं है. It is emotional numbing या फिर detachment.
मतलब people who are suffering from PTSD become emotionally numb and detached from others. Exfoliation भी नहीं, ये तो filler option है. Now, identify the major disorder under which post-traumatic stress disorder is categorized. Again, a very simple question. फटाफट बताओ. This is obviously trauma and stress related disorders. All right, last question. Identify the official manual that is currently in use to classify various kinds of psychological disorders. Again, बताओ. It is DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. अब सबसे लेटेस्ट है 5 TR भी आ गई है. ICD is International Classification of Diseases. GSM and ISM कुछ नहीं है, filler options है. All right. Now, you can see trauma and stressor related disorders में आ जाता है PTSD, acute stress disorder and adjustment disorder. Which model emphasizes that psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving? Now, सारे जो school of thoughts है उनकी अलग अलग explanations है towards abnormality. So let's look at those explanations. Okay. So psychodynamic school सबसे ज्यादा unconscious mind पे focus करता है. So according to the psychodynamic model of abnormality, abnormal behavior arises as a result of conflict between id, ego and superego, right? And according to the behavioral model, हम सारे behaviors को learn करते हैं, no matter वो normal behavior हो या abnormal behavior हो. For example, अगर एक smoker है, वो smoking में क्यों engage करता है, even though उसको पता है कि smoking is harmful. So when you smoke, you get a sense of relief because you are conditioned to feel that way, right? So अगर हम maladaptive behaviors को सीख सकते हैं, we can unlearn those as well. Then we have humanistic existential model. ये कहता है कि हम जब अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढना बंद कर देते हैं, that is when we become abnormal, right? हम अपनी highest potential achieve नहीं कर पाते, right? So our answer is behavioral model. All right. Now, last question है, again match the following. Let's look at the options. Schizophrenia, bipolar and related disorders, separation anxiety disorder and somatic symptom disorder. Schizophrenia का क्या हो सकता है? Schizophrenia में हमने क्या डिस्कस किया इसमें से? We discussed positive symptoms. Now, somatic symptom disorder में क्या डिस्कस किया? Overly preoccupied with body related symptoms, right? Separation anxiety disorder का होना चाहिए fear of separation, but यहाँ पे mention नहीं है, that is fine. Bipolar and related disorders का is suicidal thoughts. So अगर कोई depression का या manic episode experience करता है, they do have suicidal thoughts or suicidal ideation. All right. So our answer is option number 3. All right. So with that, we are done. I hope सबने अपने स्कोर रखे हो. अगर आपके 10 above आए हैं, then awesome. अगर आपके 8 to 10 के बीच में आए हैं, so that is also great. आपको बस थोड़ी सी और मेहनत करने की जरूरत है. अगर आपके 10 से कम 8 से कम मार्क्स आए हैं, that means you need to work hard. But कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है CUET UG के लिए, and Power Within is always there for you in that aspect. All right. So with this we are done practicing all the questions. अगर आपको और questions practice करने हैं, you can always join Power Within, and वहाँ पे you can practice ढेर सारे mock tests. All right. So with that we are at the end of our session. I hope you enjoyed the video और सारे questions clear हो. If you like the video,
Then like, share, and subscribe to our YouTube channel. You can also scan this QR to join our WhatsApp and Telegram channel for daily updates. And you can follow us on Facebook and Instagram. Thank you for watching.